Hello everyone, welcome to Apti Place Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from two important newspapers. The first being the Hindu and other is the Indian Express. So the most important news and editorial of the day will be discussed in this session. Let's get started with news topic list. Today is 9th of March. The first topic is Bangladesh, India, Nepal to move ahead with MVA Act. We'll see the detail about the Motor Vehicle Act. Second, United Nations banned Russian oil import. What is the repercussion of this ban and how this is going to impact India? We'll understand that part also. Third, regular flight abroad to start after the gap of 2 years, almost the COVID-19 pandemic, which has lasted for around 2 years. So अब इसके बाद सारी चीजें नॉर्मल करने की बात की जा रही है. The second last is amendment proposed to make the land pooling mandatory, and the last is an editorial revive tax increase, stub out tobacco product use. So this is an editorial from the Hindu, and today most of the news that I'm discussing is from the Hindu itself. Apart from this, at the end of this video, there will be MCQ based questions. These questions will be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. If you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Place Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. And just to tell you about our new prelims test series, along with this test series, you will get 12 months subscription of the IAS Guested magazine and total 60 high quality tests that would ensure that you are practicing a right quality of question that is essentially required for the main examination of prelims, right? So without any further delay, let's get started with the news analysis of the day. The first news is Bangladesh, India, Nepal to move ahead with the MVA pact. This particular news is important for General Studies paper 2, that is bilateral regional grouping and agreement, evolving India's and affecting India's interest. So recently, जो कुछ important decision ली गई है regarding India, Bangladesh and Nepal, they have finalized a memorandum of understanding जो कि कोशिश ये की जाएगी कि जो BBI है ना, दैट इज बांग्लादेश, भूटान और इंडिया के नेपाल के बीच में जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, उसकी रेक्टिफिकेशन की जानी है फ्रॉम द भूटान साइड. सो दिस इज नो दे हैव streamlined this so that it can actually be executed. The MOU was signed after a meeting that was finalized between the three countries, that is Bangladesh, Bhutan, India, and Nepal on the MV Act. This is scheduled. This was actually scheduled for 7th and 8th of March 2022. Bhutan की जो participation in this meeting में, this would be acting as an observer, and this is the first meeting since the group has met after the outbreak of the COVID-19. तो almost 2 साल के बाद ये meeting हो रही है, which is something essentially very important to promote the BBIN Motor Vehicle Agreement, which will help all the member countries. नाउ एग्रीमेंट में क्या क्या एजेंडा थी मीटिंग की, बेसिकली जो इस बार की मीटिंग हुई उसमें रिसेंट में क्या क्या एजेंडा रखे गए. सो मीटिंग वाज हेल्ड टू डिस्कस द पैसेंजर्स एंड कार्गो प्रोटोकॉल की जो एसेंशियल ऑपरेशनलाइजेशंस हैं वो BBIN MVA के अंदर कैसे रेगुलेट किए जाएंगे, वेदर इन टर्म्स ऑफ पर्सनल कार्गो, जो कार्गो व्हीकल को ट्रैफिक्स हैं उनको लेकर के, एंड इवन बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल हैव साइंड दिस एग्रीमेंट वे बैक इन June 15, 2015, राइट. सो दिस इज समथिंग अगेन एसेंशियली इंपॉर्टेंट, और ये जो वापस से काफ़ी टाइम से पेंडिंग में रखी हुई है, अब उसको फाइनल एक एग्जीक्यूशन प्लान देने की बात की जा रही है. द कंट्री हैज़ एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेशनलाइजिंग this particular thing, which they would expedite the seamless movement between the facilitating trade and people to people contact. Okay, definitely if you see these countries, Bhutan, Bangladesh, India and Nepal, this is acting more or less to the ethnicity and even people to people contact that would promote a lot more trade and people to people connect. Now, benefits of agreement की अगर बात करें, this BBIN will promote safe, economically and efficient environment जहाँ पे road transport को promote की जानी है सब regions पे भी, and this will further enhance the creating institutional mechanism of regional integrations. Apart from this, the agreement should permit unhindered movement of the passengers, that is the cargo vehicles, from the 4 countries. Now, last but not the least, जो cargo vehicles होगी that do not have changed the border practice that have prevalent until now. So something very important for India and for all other member countries would be the part of this.
असिस्टेंस दी गई है इस प्रोग्राम में एडीबी के थ्रू, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने अपनी असिस्टेंस दी है, चाहे वो टेक्निकल एडवांस असिस्टेंस हो, एडवाइजरी हो या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट हो। ये सारी चीज़ें बीबीआईएन को कहाँ से मिल रही है? दैट इज फ्रॉम द एडीबी। सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दे कैन आस्क यू अबाउट द असिस्टेंस प्रोग्राम ऑल्सो, राइट। तो जो साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, द प्रोग्राम है बेस्ड ऑन द कॉर्पोरेशन. Then initiatives bring the BBIN Maldives, Sri Lanka more recent to the Myanmar also. So these would be the other countries that would be benefiting from this part, right? Now moving to the other news, that is US banned Russia oil import. This is something very significant at this point of time where Russia has invaded Ukraine and definitely Russia would have to pay for it. So US ने retaliation में क्या decision लिए हैं? उन्होंने अपने oil imports को बंद कर दिए रशिया के लिए. So this is something important for General Studies paper 2, effect and policies for developed and developing countries. So what US has recently decided, US administration ने decide क्या है कि वो इम्पोज करेंगे जो ऑयल इम्पोर्ट होती है रशिया, उसमें बैन लगाएंगे, एंड इवन अदर एनर्जी इम्पोर्ट्स दैट वाज गिवन टू रशिया, राइट, बिकॉज ऑफ द इन्वेजन दैट हैज टुक प्लेस इन यूक्रेन बाय रशियन फोर्सेस, राइट। तो यूनाइटेड किंगडम मैंने भी कहा है कि वो भी अपने जो इम्पोर्ट्स हैं उनको पूरी तरह से बंद करने की कोशिश कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ 2022. So this decision was taken that the Russia oil will not longer be acceptable at the US port. This is what the US administration has decided. Now, latest sanctions में अगर बात करें, this push oil prices resulting even in the higher prices at the pumps. So something very significant at this point of time when Russia would definitely have to pay for the action in Ukraine. So the prices at the petrol pump would increase by 11% from a week that is highest level since July 2008. We have seen the price is already on a surge compared to the other years, but इस बार काफी significantly high रखी गई है. Now the US lawmaker have given their observations, जहाँ पे US के जो हाउसेज हैं, इवन सेनेट ने अनाउंस किया है कि रशिया की जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं वो बंद करी जाएगी पूरी तरह से, एंड इवन सम पार्ट ऑफ बेलारूस विल नॉट बी देयर. एंड इन एडिशन जो पोटेंशियल है रशिया में, इवन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि दे वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड दैट रशिया को पूरी तरह से ब्लॉक किया जा सके. Now, the US has imposed just 8% of the total volume of the crude oil that is refined product last year from Russia, right? तो अगर US import की बात करें तो काफ़ी कम वैल्यू import करती है, so that the ban is not expected to have a major impact on the price absolutely, but US की तरफ से अगर देखी जाए उन्होंने अपने कैपिटल मार्केट्स में भी रेगुलेशंस की बात कही है. So at least for short while, given the upward pressure, the movement of the petrol price is something which is inevitable in this context. Now, oil export by Russia की अगर बात करें, Russia is the largest exporter of oil globally, right? And some 60% of Russia export is going to Europe, with only a small portion entered into the US market. आप समझ सकते हो कि क्या वैल्यू है. Even Germany is heavy reliance on Russia, and it has already halted the progress of Nord Stream 2 जो है उसमें जर्मनी ने इसको अभी फिलहाल के लिए पॉज कर दिया है, बट वी डू नॉट नो वेदर दिस वुड बी अ परमानेंट बैन और अ टेम्पररी बैन. 40% of Europe gas is coming from Russia itself. So this is how the sanction by the United States is definitely impacting not only some particular country but globally, specifically India में भी price rises के बहुत ज़्यादा concern है. Now impact क्या होंगी जिस तरह से US ने ये चीज़ें अनाउंस की है. So the US has already committed to release 30 million barrel of crude oil, जहाँ पे उनके जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व है वहाँ से वो रिलीज करेंगे टू 31 मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी दैट दे हैव एग्रीड एज पर देयर ऑफिशियल रिलीज. Now the US has said that this is going to cost American as well, but उन्होंने US की जो प्राइवेट कंपनीज हैं, US एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि वो किसी भी तरह से इस मौके को कैपिटलाइज ना करें और प्राइस राइज ना करें. The British Prime Minister has also told that 6% of their oil import is from Russia, but definitely they would look forward to end this also, और वो जो डिपेंडेंस है रशिया पे वो भी कम की जाएगी ब्रिटेन की तरफ से. Now the other news, regular flight abroad to start after a gap of 2 years, something very important for the aviation sector, which has definitely performed very well. Basically अभी अगर पिछले सालों की बात करें इसमें परफॉर्मेंस नहीं अच्छी रही थी, बट नाउ इट इज़ टेकिंग अ पेस, इट इज़ परफॉर्मिंग लिटिल बिट बेटर, राइट. बट पिछले 2 सालों से इनकी जो परफॉर्मेंस थी दैट हैज़ डेटोरेटेड टू अ लार्जर एक्सटेंट. So this is important for General Studies paper 2, government policies and intervention for the development of various sector and issues arising from design and implementations. So according to the Ministry of Civil Aviation,
इंडिया ने डिसाइड किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, दैट दे विल start the complete international flight operation from 27th of March after 2 year suspension, right? While the scheduled international flight services has been suspended, जहाँ पे पेंडेमिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, एंड इवन फॉर 37 कंट्रीज इंडिया हैड अ एयर बबल अरेंजमेंट. व्हाट इज एयर बबल अरेंजमेंट या फिर एयर बबल एग्रीमेंट्स? उसके अलावा इसको एयर ट्रैवल अरेंजमेंट्स भी कहते हैं. ये एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट होती है ये दो कंट्रीज के बीच में, जहाँ पे कमर्शियलाइजेशन ऑफ पैसेंजर्स और जो ट्रैफिक्स हैं, जो एयर ट्रैवल उनको स्टार्ट की जाती है फॉर अ रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट. एंड दिस इज वाई बिकॉज suspension of the flight was there for the entire world during the pandemic. Now everything is coming back to normal. इस वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है that all international commercial flight would be operating from 27th of March. Now, economic recovery की अगर बात करें, the recent step by the government will provide impetus to the economic recovery of the sector and the nation with the broader opening for the tourists, right? So this is something very important and evident at this point of time. अब कुछ गाइडलाइन दी गई है हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से. पैसेंजर ऑन इंटरनेशनल फ्लाइट दे वुड हैव टू फॉलो अ गाइडलाइन, जहाँ पे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि रैंडम टेस्टिंग की जाएगी एंड इवन द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वुड बी एसेंशियली रिक्वायर्ड इन द एयर सुविधा पोर्टल, राइट? सो RT-PCR इज समथिंग विच वुड बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट. और सिम्टोमेटिक जो पैसेंजर्स होंगे जो इंडिया में आएंगे, उनमें 2% ऑफ एयरक्राफ्ट की जो टोटल है उनको रैंडम टेस्टिंग पे भी जाने पड़ेगी, सो दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्रैकिंग अबाउट द एक्चुअल सिचुएशन ऑफ द COVID-19 इन्फेक्शन, the passengers that is coming from abroad. Now if you see how the sector was severely impacted, अगर बात करें 2020 की, जो गवर्नमेंट ने फर्स्ट अनाउंस किया था लॉकडाउन, उसके बाद बहुत सारे जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है वो बंद कर दिए गए. पैन इंडिया लॉकडाउन इम्पोज कर दी गई थी 24th of March 2020 को. आफ्टर दैट नो फ्लाइट वॉज ऑपरेटिंग. सम डोमेस्टिक फ्लाइट हैज स्टार्टेड. Now जुलाई हैज entered the एयर बबल एग्रीमेंट, जहाँ पे फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एयर बबल एग्रीमेंट की गई. फिर अगेन in last of this year, that is for 2021, गवर्नमेंट हैज announced resumptions in international flight. जो ओमिक्रॉन वेरिएंट थे उसको लेकर भी कंसर्न रेज की गई थी. सो फॉर बेसिकली अगर आप बात करें जनवरी 2020 की, ओनली 40,000 फ्लाइट वॉज ऑपरेटिंग, राइट? नंबर ऑफ international aircraft arrival and departure. For Jan 22, it was just 22,790. You can see half the number it was operating, right? And the passengers was around 64.9 lakh for January 2022. और अभी के जो प्रेजेंट में बात की जाए, दिस इज जस्ट 25 lakh. यू कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ दिस सेक्टर, एंड दिस सेक्टर हैज वेरी पुअर परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड रिस्ट्रिक्शन. नाउ द गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू रिवाइव इट as soon as possible. Now, amendment proposed to make land pooling mandatory. This is something important for General Studies Paper 2. Function and responsibility of union and state pertaining to the federal structure of our country. The Ministry of Housing ने decide किया है that they would be proposing an amendment to Delhi Development Act, that is 1956, to incorporate a mandatory land pooling. Why I'm discussing this news? This is a kind of a regional news, but they can ask you in exam कि land pooling होती क्या है और इसके क्या क्या impact हो सकते हैं. Specifically case study में भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि if you're an administrator, you have to take a decision, you have to incorporate this, how this is going to impact and how this is going to benefit. Right? So the proposed amendment of the pooling for the owner are yet to be expressed. जहाँ पे ये बात कही गई है that mandatory होगी कि उनकी participation हो, at least the minimum threshold for this is 70%. Now what is land pooling? How does it work? Land pooling होती क्या है? Under the land pooling mechanism, a group of landowners and they pull their land and hand it over to the government agency, right? और उसके बाद गवर्नमेंट उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाती है. वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहे रेजिडेंशियल भी हो सकती है या कमर्शियल भी हो सकती है. Now, the development of land and the agency distribution has deducted the portion of compensation towards the infrastructure cost, and this is done to develop the potential infrastructure and reduce the load that is with the existing and congested saturated areas. ये जो method है that has already been used for some states like Gujarat, Andhra Pradesh and Maharashtra. Now aim क्या है इस तरह की amendment की? So the aim is to ensure time bound जो development होनी है उसकी जो बॉटलनेक्स है उसको खत्म किया जा सके और टाइमली इंप्लीमेंटेड हो इस तरह की पॉलिसीज की. एंड इवन इट हैज़ कम अहेड विद द म्यूनिसिपल इलेक्शंस, जहाँ पे शेड्यूल की जाएगी अप्रैल में दिल्ली में इलेक्शंस होनी है म्यूनिसिपलिटी की, तो उसके लिए भी ये काफ़ी सिग्निफिकेंट होंगी. एंड एट प्रेजेंट 104 विलेज हैज़ बिन आइडेंटिफाइड एज अ लैंड पूलिंग. सो दीज आर सम ऑफ द ground work that has to be implemented to ensure that the citizen of this country is actually being benefited from this type of decision.
Now, the other important news or editorial is revive tax increase, stub out the tobacco product use. So this is something important for General Studies paper 3, Indian economy issues related to planning, mobilization, resource growth and development. So what I'm going to discuss under this editorial, there are 4 important subheads that I'll be discussing. First is tobacco as an epidemic, no tax on tobacco products, the missed opportunity, and the GST Council should act. And the entire editorial focuses upon the issue of tobacco tax. सो डिस्पाइट अगर बात करें हाई कोविड-19 के केसेस जिस तरह से इंडिया में हुए हैं, इवन फॉर द एंटायर वर्ल्ड, द नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक कंटिन्यू टू बी अ सीरियस पब्लिक हेल्थ कंसर्न वर्ल्ड वाइड, राइट. एक सबसे बड़ी हेल्थ कंसर्न जो इस 21st सेंचुरी में अराइज हुई है, दैट इज द कोविड-19, राइट. एंड अगर बात करें कोई दूसरी ऐसी डिजीज़ जो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है, दैट समथिंग इज India is reported to have lost the life of the 2 million people in the pandemic over the past 2 years. उसके अलावे जो टैबाको से डेथ हुई उसके भी नंबर्स मैं आपके साथ शेयर करूँ. So tobacco as an epidemic, this is what the editor want to convey, and it says that this is a silent killer which is estimated to contribute 1.35 million Indian every year, and the use of the tobacco as a resulted of more than 3,500 Indian die every single day because of the tobacco uses and it negative impact on our body. So the researcher have from many countries have concluded that the world, including India, have shown that the price increase have induced people to quite reduce the tobacco uses with dangerous non-uses. जहाँ पे ये कोशिश की गई है कि tobacco के uses को कम करने की बात है, but even government has not come up with such harsh taxation policy. Now, no tax on the tobacco product, and this is not the part of the GST as well. So nevertheless, the introduction of GST जो हुई थी 2017 में, they have not included a significant tax on this, right? And during the budget, this particular year I'm talking about for the year, that increased cigarette price just only by 5% because the consumption pattern is high. The reason being the government is also generating some revenues. In short, there has been no significant tax increase on the tobacco product for the past 4 years down the line, right? Now, moving ahead with the missed opportunity that government has missed in union budget, this was an excellent opportunity जहाँ पे गवर्नमेंट ये कोशिश कर सकती थी कि जो ये भी ड्यूटीज़ हैं इस तरह के प्रोडक्ट पे जहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इनसे फैलती हैं, वो डिजीज़ को रोकने के लिए हमें टैक्स लगाने की ज़रूरत थी, राइट. एंड द मार्केट वॉज जस्ट प्राइस इन अनरियलिस्टिक मैनर जहाँ पे नेगेटिव प्रॉस्पेक्ट की जा सकती थी कंपनीज के लिए भी. Now, the absence of tax increase on the tobacco has potential to reverse the reductions in tobacco uses. जो prevalence है, even for the decade, they had a push more than to harm the way. So, essentially, it is essentially required at this point of time, जो tobacco products हैं, उनके consumptions के लिए उसकी price value high की जाए, या government कुछ ऐसे regulations लाए, जहाँ पे जो ये tobacco एक endemic की तरह death create कर रही है, उसको reduce किया जा सके. Now the GST Council should act. How they should act? What are the way out? तो जो GST Council है, they could raise the GST rate on the tobacco product, या फिर जो GST की सेस वो states के साथ शेयर करते हैं उसकी शेयरिंग को बढ़ाया जाए. The GST Council meeting should strive for a public health where tobacco industry should be given the GST compensation rate, या फिर जो GST सेस है states के साथ जो शेयर होती है उसमें भी कुछ important provisions लाए जा सकते हैं जहाँ पे इसकी प्रोडक्शंस के लिए एक जो कंपनसेटरी पार्ट है वो हो सके, and even the uses should also be reduced, right? So this aim to assess the increasing affordability of tobacco product in India and also rationalizing the tobacco taxation under the GST, because GST cess and GST taxation is something which has lot been a debate in terms of tobacco, alcohol and another product, right? So this is, let's see how the next meeting of the GST Council should set aside a roadmap for all these products. Now, moving ahead with the MCQ questions of the day, before I proceed, just to tell you the answers of yesterday question. For first question, the correct option is C. For second question, also the correct option is C. Today's MCQ, that is the National Science Day. National Science Day is celebrated every year to commemorate the discovery of Newton's law. And the theme for this year is Future STI, that is Science, Technology and Innovation Impact on Skill and Work. Second, National Institution Ranking Framework. Niti Aayog established the National Institution Ranking Framework in September 2015, and the framework outlined the methodology to rank institutions across the country. So you have to choose the correct option. If not, if you don't know the answer, you can refer to the blogs and other parts also. So this was all about the daily news and editorial analysis followed by the MCQs. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.